हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं। तो आज हमने तुम्हारी सुन ली है क्योंकि तुम लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे हेल्स पैराडाइज देखो, हेल्स पैराडाइज देखो। तो फाइनली आज हम हेल्स पैराडाइज देख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों है, क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर वेलर भी नहीं देखा ना इसने कुछ देखा। जब मैंने नहीं देखा तो ये कहाँ से ही देखेगी। सही बात है। हमारे लिए बिल्कुल नया है क्योंकि सबके लिए ऑब्वियसली नया ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही आया है ये। हमें भी करीबन शायद 1-2 हफ्ते हुआ है, क्योंकि इसके 3 एपिसोड मुझे दिखा रहा है अभी तक। कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा, कुछ लोग हो सकते हैं हमारे जैसे जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो सोच रहे हैं कि इस पे रिएक्शन करते हैं और उम्मीद है कि सब लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर इसके अलावा कोई और भी एनिमे हैं जो नए आए हैं, तुम लोगों को पसंद है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे लिंक दो, ट्राई करते हैं। बाकी फिलहाल ये हेल्स पैराडाइज देखते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारी सीरीज को अपने चैनल पे डाल रहे हैं, तो आप जाके एक बार चैनल एक्सप्लोर करो। तो चलो पंचायत ना करते हुआ वीडियो करते चालू। तो बेसिकली इस फर्स्ट एपिसोड का नाम है द डेथ रो कन्विक्ट एंड द एग्जीक्यूशनर, समथिंग कुछ ऐसे करके है। बाकी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम देखने के हिसाब से आज देखते हैं कि इसमें हमें क्या नया मिलने वाला है, जो हमने अटैक ऑन टाइटन वगैरह इन सब पे नहीं मिला है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ओके है ब्लड। अबे मुंडिया रखी थी बंदों की कटी हुई। Requires an extremely high level of skill. The neck, being composed of strong bones and more than 10 layers of muscles, is not Oh my easily God. severed. Any last words? No. Removing the head in a single blow is nearly impossible. तो स्टार्टिंग में ही सही में एंड में पहुंचा रहे हैं यार। Strikes, which makes it a horrific sight to behold. उसकी गर्दन कटी नहीं रही है भाई। हाँ, उसकी गर्दन कटी नहीं रही है। क्या गर्दन है भाई की, गर्दन के लिए तालियां। भाई तलवार तोड़ दी और उस घंटा कुछ नहीं हुआ उसे। Impossible. Why is it that I can't die? Or rather, that I won't die? हाँ, ऐसा क्यों, कैसे हुआ? I have no attachment to life. I've slaughtered more people than I can count. कितने लोगों को So मारा I है? never expected to live for very long. इस बंदे ने इतने लोगों को मारा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मारा इसने भाई। ये आ गया है एपिसोड का नाम। The death row convict and executioner, exactly. As a child, you studied nothing but killing techniques. Many lose their lives during the training that you endured, but survivors achieve superhuman bodies. That makes sense. Since you're from Iwagakure, breaking a sword with your flesh is a simple task, right? Yeah, exactly. And that guy was so shitty with a sword, I didn't even need ninjutsu. हाँ, You can use ninjutsu? Would you mind demonstrating for me? Why? Just my personal interest? Then no. Burn him at the stake! Burning at the stake is traditionally the punishment for जलाएंगे। arson. चलाएंगे। हाँ, Searing the flesh creates unbearable pain Oh while the God. extreme heat causes muscles to shrink, which contorts the body so severely that the bones मतलब are इन लोगों ने broken. ये दिमाग नहीं लगाया कि ये Ultimately, बंदा the कटा क्यों target नहीं इसकी dies either गर्दन। by suffocation or by ऐसे तो हो poisoning सकता है from जले the भी ना। smoke. This execution method is known to be particularly painful. In some cases, the person is killed beforehand as an act of mercy. Sorry about that. उसका असर ही नहीं हुआ, वो टूट गए भाले भाई। अभी आग लगाएंगे, मुझे लगता है इसके कपड़े जल जाएंगे और कुछ नहीं होगा ऐसे। और चिल्ला भी नहीं रहा है तो कुछ भी। मुझे लग रहा है जलेगा भी। ओ भाई कितना मस्त लग रहा है। हाँ, देख उसकी आंखें और मुंह दिख रही है, देख। What? But how? The flames are so high. Believe me, despite what it looks like, this isn't on purpose. If anything, I want you to kill me. बाल भी नहीं जले इसके। If you're not looking at me anyway, you might as well give me some clothes. Please? Your nudity doesn't make a difference either way. My job is to create a record. Continue. So you wanted to know my background? It's pretty dull. That's my job. My parents? No clue. I know they were killed by the village chief when I was a baby, but I don't know why.
doesn't bother me. Dreams? None. Shinobi don't have some grand purpose. They just kill as they're told. How did I get captured? Well, let's see if I remember. भाई देखो, पहले एपिसोड के हिसाब से ना मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, हम लोग शांति से बैठ के एपिसोड देखेंगे, आखिरी में जो बात होगी करेंगे, नहीं तो अभी हम इस पे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस एपिसोड देखना चालू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा, हाँ स्टार्टिंग में कैरेक्टर बड़ा फाड़ू दिखाया, अच्छा लग रहा कैरेक्टर, पर उसके बाल नहीं चले, बाल तो चलने चाहिए थे ना। चलो यार। I tried to leave the village, but my cohorts betrayed me and I got caught while I was out on a job. I assume the chief put them up to it. It's forbidden for anyone to leave the village. I don't blame them. So, what made you want to run away in the first place? An execution by bulls! In this form of execution, ropes attached to the target's legs are tied to bulls. Human legs can withstand up to 500 kilograms of force, but a bull can exert up to 950 kilograms. This method इसको फाड़ देंगे बीच में से, लेकिन ये फटेगा नहीं। splits the victim in two from groin to chest. ओह! what the hell is going on? ये बहुत गलत था भाई। नहीं, गच्छा भाई, दोनों मिलके बैठ गई। ये किस यार है भाई? दोनों से क्या है? You bring out some more bulls! It's strange. What? My indestructible body? Not that. Despite your claims that you didn't want to live, it still appeared as though you were resisting. Why would a person with no will to live? No. Actually, tell me why you wanted to get away from the village. Do you still refuse to answer that question? Who cares about the record? Hurry up and... Please let me work. Ma'am, the bulls... Please let me work. All right. Please let me... It's nothing interesting. I was the best in Iwagakure. The chief held me in high regard, and I ended up getting married to his daughter. But as it turned out, that girl was a complete idiot. How does a shinobi, let alone the chief, have a daughter who's that stupid? Her sheltered childhood made her naive, and she turned my entire life upside down. Remove your shoes when you're inside the house. And you should always remember to pray at least once every day. Say thanks for the meal at dinner. To show respect for the life we've taken. सही तो सिखा रही थी, कुछ गलत थोड़ी सिखा रही थी। I was afraid I'd lose my edge. If those are your feelings, then there's nothing to be done. All right, I'm prepared to honor your wishes, but there is one final thing that I'd like you to do for me first. I knew I'd been set up. But I also knew his cohorts would follow me, even if I got away. I'd fallen into their trap. I realized I'd been foolish to defy the chief in the first place, so I just surrendered. And that's it. It's kind of a boring reason. I hope you'll forgive me if I'm speaking out of turn, but because you're a woman, I don't think you should involve yourself with him. Has anyone told you what his name is? Former shinobi from Iwagakure. Gabimaru, correct? Well, there's another name he goes by. Gabimaru the Hollow. He's empty. No blood or tears. That monster slaughtered 20 men when they arrested him. They say the shinobi from there takes some drink. It's known as the Elixir of Life. Elixir? The legendary medicine of immortality that comes from Shinsenkyu. अच्छा. Elixir. I'm sorry, ma'am. I'm sure I must sound crazy. But regardless of all that, he's dangerous. I doubt that somehow. Well, if he's really so hollow, then why fight 20 men to live? There'd be no reason. Despite your claims that you didn't want to live, it still appeared as though you were resisting. She's right. What am I doing? I have no attachment to life.
So why फिर not क्यों just बच रहा है? die already? वही तो. Tomorrow, when they try to execute me again, that's when I'll end it. ये हम कुछ ना कुछ करके बच रहा था. Death लेकिन by आप boiling, कह रहे हैं कि also known as death by cauldron, uses a massive amount of hot oil. However, the oil combusts at a temperature of 370 degrees Celsius, so the earthen pots commonly used in the Edo period were unable to withstand the heat for very long. Why won't I die? Why keep suffering? I have no attachments. I should be empty. You little rat! How am I to kill you? Sir, it's done. The arrangements have been made. I'll begin when you're ready. क्या? देखो. वो मरना भी चाहता है, सब कुछ है, लेकिन वो मर नहीं रहा है. वो कह रहा है मैं क्यों मरूं पता नहीं. This time. And how long are you going to keep trying? It's starting to get old for me. We finally found a way to shut you up for good. अब मजा आएगा लग रहा है. मुझे नहीं लगता ये मरेगा. What? Don't be तो वही लड़की mistaken. है. This woman isn't just another inspector. She's a sword tester sent to us from Edo. Meet the executioner, Yamada Asaemon Sagari. यामादा ये एग्जीक्यूशनर है. इसका काम होता है मारने का ही. तभी ये इससे पूछताछ कर रही थी. इसको लगा कुछ ऐसा होगा, पूछताछ वाली होगी ये. The term Yamada Asaemon is the trade name for the Ronin of the renowned Yamada clan. These extremely skilled warriors have offered their talents as sword testers and executioners for many generations. They are a clan of master swordsmen, able to behead a target with a single blow. You're a female. Asaemon. That's correct. Yes. And you're Gabimaru of Ishu, the runaway shinobi I've been ordered to cut down. You wanted someone to kill you. I'm here to grant your wish. काट दिया? नहीं. If anyone can end my life, it's her. Quick, Sagari! Kill him where he stands! As you wish, sir. ओह ये बच रहा है. ओ अब आएगा मजा. अब फाइटिंग होगी दोनों में. Why did you dodge my blade? You would have died if you had stayed still. I would? Really? Do I not want to die? Why not? वही तो मरने तो चाहता है, तू मर जा. Thanks to my profession, I've seen death, time after time, and I've learned how people feel during their final moments. One's true self is reflected in the blade. Some try to appear brave as they face death. Others frantically beg for mercy. And of course, some lie to themselves and say they've accepted their fates. What? Okay. Why? Gabimaru the Hollow. One thing is obvious. You are empty inside. After hearing your story, anyone would know that much. But you lied about something, not wanting to live. It seems you do have an attachment. Because you love your wife. In fact, not only do you treasure her, but she's your reason for living, isn't she? And pray at least once every day. इसकी बीवी Say थी. thanks for the meal. We should always do our best to live मेरे को भी लग रहा था ordinary थोड़ा, lives, so we can be क्योंकि इसी की like जिंदगी में यही बताया इसने कहानी का. you. अब आएगा मजा. I know I'm right. So why do you continue to lie to yourself? It was impossible to kill you because of the deep feelings you have for her. Do you not care about life? Or is that just what you've decided to tell yourself all this time? I've heard enough! You have no idea! You don't know anything about me! Or about the world that I've lived in!
I'm hollow! Don't be Hollow. silly. You're not hollow. You're wrong. That nickname suits me. I'm so used to ugly things. Which means ugly is all I can give you. I have to disagree. You're a kind person. इसीलिए इसको फीलिंग्स यूज के लिए Sorry, disgusted by my डीप फीलिंग है उसे. But you're different. Sorry. I don't know. Maybe being used to ugly things isn't so bad. In Iwagakure, men are soldiers, and the women just bear children. We're not allowed to live independently as people. That's what happened in my face. My father wanted me to give up on living a typical woman's life. आंखें भी नहीं थी, आंखें भी नहीं है ना इसकी. Fortunately, it isn't that easy to destroy a person's heart. Maybe, but पहले तो उसकी आंखें नहीं दिखा रहे थे. उई. What did you do that for? See? Look how much you're blushing. There's just no way a person like you could be hollow. My name is Gabimaru the Hollow! And I'm nothing but a heartless monster! बीवी के लिए पागल है. No matter how hard I try, I can't be human! ये उसको मार मार के जानबूझ के दिखाता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ. people for a living. We'll live. थोड़ा थोड़ा तो ये समझ में आ रहा है, मतलब ये जानबूझ के करता था उसको दिखाने के लिए कि जो वो बोलती है कि तू एक अच्छा इंसान है, कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं मार के दिखा रहा हूँ जानबूझ के कि मैं बुरा इंसान हूँ. लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं उसको चाहता था और इसीलिए ये मर नहीं पा रहा था. रजिस्टर भी इसीलिए कर रहा था. सही है, काफी कुछ बता दिया एक एपिसोड में. अभी तो कुछ और भी पड़ा है इसमें. स्टार्टिंग हुई है भाई, स्टार्टिंग का पहला एपिसोड है. बट ठीक है, तब बोरिंग नहीं है. The chief won't mind it. He knows that's what's best for his daughter. I'll stop killing. We'll live somewhere quiet, keeping to ourselves. We'll be normal. Shut up! You know that's impossible! But it isn't! Wait, What is this? what? I've come here with an official pardon from the Shogunate. Not only does it clear you of all charges, but if you receive it, you'll be guaranteed the Shogun's protection. So with this pardon, you'd be safe from the magistrate's office and the village's shinobi. Really? But I don't understand. However, it comes with a condition. You will go to the underworld. Huh? है? Like where you go when you die? That's right. You're telling me to die? Well, no. There is a land called Shinsenkyo, a place without pain, brimming with fertility and joy. Since ancient times, believers have known it by many names. Paradise, the other side, or heaven. Hell's Paradise. It was said to lie far to the southwest, somewhere beyond the Ryukyu kingdom. अलग And से now, चाहिए. finally, it's been found. मस्त है, वो भी है. Butterflies dancing among the flowers, voices singing in the distance. It's just as the legends described it. Supposedly, the immortality-granting elixir of life can be found there. So the Shogunate sent a search party, hoping to bring back the powerful elixir. However, मस्त लग रहा है, फ्लावर ही फ्लावर है. 5 more expeditions were sent out, but not a soul returned. वहां से कोई भी वापसी नहीं आया जो भी गया था. Only the things their bodies became. What? Oh, my I still don't God. get it. What kind of story was that? It sounds like some fairy tale. Yes, everyone believed that it was fiction. Until they saw that. Human bodies turning into flowers. How mysterious. It sounds quite mystical, doesn't it?
This means the legendary place is real, and the sweet लगता है ये elixir of जाएगा। life can be found there. We'll need expendable people for the next expedition. एलिक्सर के लिए गए थे, वो एक ऐसा चीज है जिससे इमॉर्टल हो सकता है बंदा ना, इसलिए। Whomever is able to bring back the elixir of life shall receive a pardon. I came to identify potential candidates for the assignment. People Okay. with skill, who feel an unrelenting desire to live. On my way here, I learned the whereabouts of your wife. She's still waiting for you in Iwagakure. ओके, The इसकी day बीवी you वहाँ were पे वेट कर रही captured, है। she shut herself away. No one's heard her breathe a word. It seems that she believes you're going कितना to तगड़ा प्यार return. है। हाँ, उसको पता है कि तुम I'll ask वापसी you आओगे again. इसलिए। Do you have any attachment to life? Traveling to a mysterious island to compete for a pardon. Battling heinous criminals condemned to death. That is the only way for you to be reunited with your beloved. अच्छा। Gabimaru, will you risk death for a life with her? The choice is yours. That's ridiculous! I'm not setting this man free to chase after some fairy tale! The Shogunate has commanded it. He's a dead man walking! There are plenty of others just like him. Stand in my way and I'll be glad to execute you both. Are you listening, Hollow? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़े ना इन लोगों से। Heartless. It isn't that easy to destroy a person's heart. रो रहा है। You said you wanted to see ninjutsu? ये क्या हुआ? ओह, कूल। If this'll do, then let me show you. Minpo Ascetic Blaze. ये क्या हुआ भाई? ओह, Impressive. निंजुत्सु भाई, मेरे को भी करना है। Elixir of life, huh? I'll go find it for you. So, where do I start looking? I'd like you to come with me. We'll travel to Edo and then we can... Making a detour to Edo sounds like a pain. Can't we just go directly to the island? He went from indifferent to insufferable. We'll call it off if you'd like. No, I'll do whatever I need to. My mind's completely made up. Doesn't matter how many criminals I have to face. I will make it back alive. For your sake. मतलब पहले एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जग गई है कि इसका सेकेंड एपिसोड भी जल्दी से जल्दी देखें। तो जल्दी से जल्दी देखने का मतलब ये है कि आप लोग इस एपिसोड को जितना ज्यादा प्यार दोगे अगर इस वीडियो पे 2000 से ऊपर व्यूज आ जाते हैं 2-3 दिनों में, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड अगले दिन ही डाल दूंगा। अब दूसरी चीज, इसमें इस कैरेक्टर के बारे में काफी सारी चीजें पता लगी हमें, जिसका नाम है होलो, और इसका एक अलग नाम है जिसको नॉर्मल नाम है, बट इसको हम होलो से। शिनोबी किसको बोल रहे थे? शिनोबी है, वो एक अलग टर्म होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसको निंजुत्सु आता है। निंजुत्सु के बारे में मुझे पता नहीं, अगर तुम लोगों को पता है तो मुझे बताना कि क्या फॉर्म वॉर्म कुछ होती होगी, पता नहीं मुझे उसके बारे में। तुम लोगों जिन लोगों ने नरूटो देख रखा होगा उनको पता होगा, बट मैंने नरूटो नहीं देखा तो मुझे नहीं पता है। तो देखो, अब आखिरी में एपिसोड में दिखाया कि इसको हेल्स पैराडाइज में भेजा जाएगा, जहाँ पर एलिक्सर नाम का एक पौधा है जो कि तुम्हें इमोर्टल बना सकता है। तो वो काफी लोगों को चाहिए। जो भी लोग वहाँ गए थे वो वहाँ से वापसी जिंदा नहीं आया, वो फूलों की फॉर्म में आए हैं। लेकिन जो भी जाते हैं उन लोगों को पता होता है कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन वो होता कुछ और है। तो अब हमारा होलो वहाँ पे जाने वाला है और अब जाके उसको वापसी आना है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं है एक्चुअल, वो वाइफ ही बोला है इसमें। भाई वाइफ बोला है कि नहीं, मुझे कंफर्म करना। गाइस, इनको ये कंफ्यूजन है कि ये जो लड़की दिखाई गई है वो इसकी गर्लफ्रेंड है, बट मेरे को ये लगता है कि वो इसकी वाइफ है। तो कंफर्म करना आप लोग कमेंट में कि वाइफ है कि गर्लफ्रेंड। क्योंकि मैं जो समझ पाया मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मस्त था, तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और सब कुछ करना। तो जो भी हमारा सब्सक्राइबर या जो
जो भी आप लोग हैं, अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जस्ट ₹29 पर मंथ से मेंबर बन सकते हैं। इसमें आपको कुछ नए मतलब चीजें देखने को मिलती हैं, यूज करने को मिलती है। हम लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, काफी सारे लोग यूज भी करते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आप चाहते हो इन फ्यूचर पे मैं रिएक्ट करूं, वैसे तो मैं सारी सीरीज अब कंटिन्यू कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही निंदुत्सु वाले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।